Hello guys, I'm Sumit Nahak. I had secured all India rank 691 and I was teaching you rotational motion. So today we will be learning about the rest of the topic and exercise. So last lecture रे mostly सब topic पूरा cover ही साल ने हमारे system of particles रा. आज हमें last topic पढ़िया किसी analogs जोड़ा कि relate करें relation between translational और rotational motion को आउ I'm going to last example 6.12 and then we will move to exercise. Okay, so let's start. Relation between it होचे basically it होचे revision whole chapter everything जहाँ मैं तुमको पढ़े दिली से chapter revision एडा सब जिनिस मैं तुमको कहि साइड just टिके और तापर हमें conservation of angular momentum पढ़िया then हमें exercise को move करिया. Okay. So relation between translational and angular momentum. Okay. So relation between translational and angular momentum रे मु तमो सब तीनटा इक्वेशन कहतली ट्रांसलेशनल मोशन में तीनटा इक्वेशन सब जगह मोर फॉर्मूला गोथरे लिखि दछ रिवीजन रे तापर हम एक्सरसाइज करे जा द्वारा तमो इजी हो रिकॉल करिया रे फॉर्मूलास गुडा. ओके. तो ट्रांसलेशनल मोशन रो और एंगुलर मोशन एंगुलर बा रोटेशनल motion. Sorry, momentum like this. E equal to U plus 80, S equal to UP plus half 80 square, E square minus U square equal to 2GH. 2AS. Angular motion rate, omega equal to omega naught plus alpha T. Theta equal to omega naught T plus half alpha T square omega final square minus omega final square minus omega initial square equal to 2 theta alpha. Okay. Our force analog torque, momentum analog angular momentum, mass analog moment of inertia, kinetic energy formula half mv square एठी and rotational motion रे half I omega square. तो सब जिनिस हम टिके मन अछि होपफुली. ओके. एतिया फार्मूलास को तुम जा कहतिली बा आगु को रिवाइज कर दोछि. टॉर्क रो फार्मूला कोन हम पढतिले r क्रॉस f, l रो फार्मूला कोन पढतिले r क्रॉस p, आई तो तुम जानछो. आ वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, work done by torque. Work done by torque रो फार्मूला कोन आस्थिला यार कार यदि मन अछि work done by force इक्वल टू force into displacement. तो work done by torque कोन आइसबो torque dot theta. ओके. torque into theta केते से angular displacement कोछ. सेम सेम power by torque into angular velocity. Okay. d theta लगली theta. Okay. तापर हम तुमको कह दोछ जे कंजर्व सब जा फार्मूला आ एनालॉग तो हम देखैथिली मो बुक रे एनालॉग ऐसा मन थे तमरा होपफुली. देन हम नेक्स्ट टॉपिक वाज आज रो मेन टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? हमें ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़िथिले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोन गुथला जेतला पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट रे किछ एक्सटर्नल फोर्स पडिनी तार वेलोसिटी केबेले चेंज होबन. ओके. इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन कोन थिला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रो until and unless an external force is applied to a body, its velocity is not going to change. So same applies here. कोन until and unless an external torque is applied, its angular velocity by angular momentum will remain constant. तार मीनिंग कोन एक्सटर्नल टॉर्क जेतला पर्यंत अप्लाई कराइनी सेतला पर्यंत angular velocity angular momentum constant. तार मीनिंग कोन माने तार इनिशियल टॉर्क जेते थिला सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जेते थिला
फाइनल एंगुलर मोमेंटम से तैयार हो जतल पर्यंत टॉर्क अप्लाई कराए सेडा ही कह जाउछि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होछि ओके तो तार हमें केतरा डेफिनेशन हमें देखि परिया डेफिनेशन को तार केतरा हमें एग्जांपल देखि परिया कॉमन लाइफ रे किछ एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जतल तमे गोटे मनकर फॉर एग्जांपल हम गोटे एता निजो तमे मनकर गोटे डेंचर ओके एटा कि मो फर्स्ट लेक्चर भी कहितली आउथरे कहि दोछि जतल गोटे डेंचर तार हाथ दिटा तमे डेंचर कोन तमे निजे भी ट्राई करियो हाथ दिरे तळ पाखु रखियो एमि पाखु रखियो आ गोटे केस रे हाथ दिरा पूरा वाइड ओपन करो हाथ दिटा को वाइड ओपन करो हाथ दिरा को वाइड ओपन कला पर जतल तमे देखियो हाथ दिरा तमर पाखा पाखी अछि आई रे वैल्यू कोन अछि छोट अछि हाथ रे पाखु रखियो त तमे बुलियो ट्राई करियो रोटेशन रे तमे इजीली बुली परियो अधिक फास्टली बुली परियो अधिक फास्टली बुलुछ तार मीनिंग कोन तमर एंगुलर वेलोसिटी अधिक होछि ओके बट जतल हाथ तमे वाइड ओपन कर देलो तमर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हला इंक्रीज हला ओके सेतल तमे हाथ मूव करी बुलिया पे ट्राई करियो स्पीड रे बुली परिबो नाही कोन पे तमे तमर एंगुलर वेलोसिटी कम ही होछि ओके तो ए जगह रे L इक्वल टू जते थिला I ओमेगा L रो वैल्यू I ओमेगा एटा तो मनथियो तमर लाइफ लेक्चर रे कहितली एठी भी L रो वैल्यू सेम रहबा I ओमेगा I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 एडी I रो वैल्यू इंक्रीज हला सेते ओमेगा रो वैल्यू कम हैला टू इक्वलाइज द एंगुलर मोमेंटम ओके एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम एडा ही कहूची आ क्यार किछि बेसी हाईफाई जिंस एडा नाही एडा तो तुम जानथियो टॉर्क इक्वल टू dl by dt कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रे जदी डेरिवेशन तुम देला इफ asked an exam torque equal to dl by dt एटा तो तुम जानछो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन रो थिला f equal to dp by dt तार ही तुम एनालॉग से दे लगो torque equal to dl by dt तो if torque external is 0 माने dl by dt is 0 L is not changing with respect to time so L is constant okay so conservation of angular momentum एती जिंस तुम जानितला डेरिवेशन तुम कहली तार डेफिनेशन जानला पर किछ एग्जांपल्स बुक रे जोडा देछि एग्जांपल देली देन हमें नेक्स्ट टॉपिक वाज दिबा गोटे एग्जांपल एडी तुम एडी कर दा 6.12 जोडे के मो लास्ट लेक्चर रे कहितली करिएली 6.12 लेक्चर करिया ए एग्जांपल सॉल्व करला पर वी विल मूव टू टुडेस मेन टॉपिक हमर क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चन ओके एग्जांपल 6.12 लास्ट लेक्चर में 6.11 जे करथिले 6.11 हां एती जे लास्ट लेक्चर फिनिश हितला आज 6.12 लेक्चर ओ एग्जांपल करिया ओके तो 6.12 लेक्चर रे कोन कहूची a cord of negligible mass is on round the rim of a flywheel of mass 20 kg एटा माने करो flywheel जार की mass 20 kg आर अराउंड रे वाई रोटेटिंग एच ओके वाई रोटेट आर सिंपलीफाइड फिगर नै जिवा एटा मास होचे 20 kg रेडियस 20 सेंटीमीटर ओके तापर ए स्टेडी pull of 25 newton is applied on the cord as shown in the figure 6.31 ओके फिगर भी हम दे दीछु आपको हमें 25 न्यूटन फोर्स देके तळो को से पुल कला ओके तो क्वेश्चन एबे कोन कहै छै हम क्वेश्चन में कोन पचार छै कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील ओके एबे हम कोन कहै छै एंगुलर एक्सेलरेशन काढे तो एंगुलर एक्सेलरेशन बे हमें कोन जाय फार्मूला कोन छै हम पर एंगुलर एक्सेलरेशन आप पर 25 न्यूटन ना फोर्स को हम कोन कहै छै एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील तो एडी हम जदि टॉर्क इक्वल टू हम कोन जानछन्दी I अल्फा आ गोटे फार्मूला रे कोन अछि टॉर्क रो R क्रॉस F तो R क्रॉस F अछि जदि हम ए फार्मूला एडी पके हमर फोर्स रो वैल्यू अछि जदि हम एडी टॉर्क काट देई परिबा टॉर्क हम एडू काट देई परिया F * R पकेगी अब हम I रो वैल्यू भी हम पकर अछि mr² अमोड मेजर ने अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मुको कहली टॉर्क रो वैल्यू हम काडिया फोर्स इनटू रेडियस पकेगी फोर्स और रेडियस पकले टॉर्क रो वैल्यू पळाइला तापर टॉर्क रो वैल्यू रेडी पकेदा अब I रो वैल्यू हम पकर अछि I = mr² अल्फा रो वैल्यू पळा आसबो ओके तो लेट्स सॉल्व दिस टॉर्क इक्वल टू R * F R केते
20 सेंटीमीटर को जदि मु मीटर रे कन्वर्ट करी केता हो 0.2 मीटर into 25 तो टॉर्क इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर हो कि नहीं 25 दुगुणे 50 5.0 5 न्यूटन मीटर ओके तापर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब काढिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील तो एडा गोटे डिस्क टाइप रो एक्ट करछि हो कि नहीं तो मैंने चारिटा रोटेट ही गछि डिस्क टाइप रोटेट करछि तो एडिया रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केता हो m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मास केते देछि हम 20 kg मास केते देछि 20 kg into radius रो स्क्वायर 0.2 into 0.2 divided by 2 10 into 0.22 2 into 0.2 0.4 होची तारा kg मीटर स्क्वायर ओके सब बोले 0.4 होची तारा एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन काढिया टॉर्क इक्वल हम कोन जानचंदी I into अल्फा तो फार्मूला पको टॉर्क रो वैल्यू तम पाकर अछि केते मारतिला टॉर्क रो वैल्यू 5 इक्वल टू 0.4 into अल्फा तो अल्फा रो वैल्यू पड़ा असला 5 divided by 0.4 तले केते आछो 12.5 सेकंड ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछ find the work done by the pull when 2 meter of the cord is unknown work done काढिया अछि तो हमें वर्क डन रो फार्मूला कोन जानचंदी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन रो फार्मूला जानचंदी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट हम दे देछि 2 मीटर इनटू फोर्स तो हम पे फोर्स भी तो गिवन अछि केना 25 न्यूटन तो 2 मीटर इनटू 25 तो वर्क डन इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर बाय 50 जूल नेक्स्ट क्वेश्चन जी बस find also the kinetic energy of the wheel at this point assume that the wheel starts from rest okay तो हम kinetic energy भी काढिया अछि तो kinetic energy पे हम फार्मूला कोन जानचंदी हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल मोशन रे हो कि नहीं तो हम बकरे I तो गिवन अछि I हम काट देथिले mr स्क्वायर बाय 2 जार की वैल्यू आस्तिला 0.4 kg मीटर स्क्वायर बट ओमेगा रा वैल्यू काढिया अछि ओमेगा रा वैल्यू किम काढिया हम बकरे कोन कोन एडी गिवन अछि पको मो बकरे अल्फा गिवन अछि ओमेगा इनिशियल गिवन अछि जार की वैल्यू 0 हमो बे काढिया रा कोन अछि ओमेगा assume the kinetic energy will at this point माने ओमेगा फाइनल काढिया अछि ओके ओमेगा फाइनल जान ले ना एडी पक्का वैल्यू अछि काइनेटिक एनर्जी रो ओके ने तो ओमेगा फाइनल काढिया पई हमें किमिति काढिया ओमेगा फाइनल हम पकरे तीनटा इक्वेशन अछि मोशन रो कोन कोन ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी गोटे इक्वेशन ऑफ मोशन आउडथिला थीटा इक्वल टू ut सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आउडथिला ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल द स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा अल्फा ओके तो एडा हम पके बेरे एडी कमे नंबर टी नाही एडा पके बेरे टी नाही तो एडा भी पके बेरे ए इक्वेशन न देखो ओमेगा फाइनल हम काढिया अछि ओमेगा इनिशियल गिवन अछि अल्फा गिवन अछि थीटा हम काढिया अछि थीटा डा हम काढि परिया कोन किम काढि परिया ते कोन होइतला find the work done by the pull when it is 2 meter of the cord is unknown एडा मन करो सर्किल ए सर्किल रो रेडियस होची 0.2 मीटर ओके तो सेव कोन होई छै 2 मीटर रोटेट कराई छै 2 मीटर रोटेट कराई छै तो से केते एंगल मूव करछि 2 मीटर रोटेट कराई तो केते एंगल मूव करछि एडा मन करो छै थीटा तो हम कोन जचले थीटा इक्वल टू r बाय रेडियस हां कि नहीं तो r रो वैल्यू मो पाकर अछि केते 2 मीटर बाय रेडियस रो वैल्यू केते अछि 0.2 तो थीटा इक्वल टू 10 पाई सॉरी थीटा इक्वल टू पाई मो लिख देलिए 10 थीटा इक्वल टू 10 रेडियन ओके तो थीटा रो वैल्यू ले मते मिलला तो ए फार्मूला पके वैल्यू ओमेगा फाइनल द स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल केते 0 into 2 थीटा रो वैल्यू केते 10 अल्फा रो वैल्यू केते आस्तिला आंसर 12.5 तो सो जा वैल्यू पको
So omega final ro square is equal to 250 radian per second ro square. Okay, तबे हमको कौन काढार अछि काइनेटिक एनर्जी काढार अछि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी काढो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई रो वैल्यू केते काढा आइतला mr स्क्वायर बाय 2 करी 0.4. तो 0.4 को मडी पके हेबे इनटू ओमेगा स्क्वायर रो वैल्यू केते 250 50 जूल. ओके हाँ आई होप तुम क्लियर हला टिके लंबा हिला एडा बैक जे तो देखि दो बच्चा दिन अबछा पड़ला. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करिया. कंपेयर आंसर्स ऑफ सॉरी कंपेयर आंसर्स ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट बी रे आंसर केते असला वर्क डन इक्वल टू 50 जूल. काइनेटिक एनर्जी केते असला 50 जूल. तार मीनिंग कोन वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माने energy is conservation of energy. Energy is never created and never destroyed. Conservation of energy. Okay, work done equal to kinetic energy. आर मीनिंग कोन सब जत्ति की भी हम वर्क करथिले सब जगह तार काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हो जाय छै. ओके नो लॉस ऑफ एनर्जी. So hopefully the example ला तमरा क्लियर हला. आ पूरा चैप्टर मो ऑलमोस्ट आज चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट सरी गलानी. ओके सब जा फार्मूला तमरा मन अछि. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज टुडे. आज हमें स्टार्ट करिबा एक्सरसाइज. ओके एक्सरसाइज ऑफ सिस्टमेटिक पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. लेट्स स्टार्ट. आज टोटल 17 टा एग्जांपल अछि. तो मत लागुच मु आज 8टा कि 9टा ही कंप्लीट करि परिबी. आ बाकी 8टा 9टा जोड़ा बळिला ताको हमें नेक्स्ट लेक्चर रे सॉल्व करिया. ओके तो ट्राई करिया जी जति मैक्सिमम हम करिया पे. तो एक्सरसाइज रे फर्स्ट क्वेश्चन करिया. तो फर्स्ट क्वेश्चन का कहै छै गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर सिलिंडर रिंग एंड क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. तो नेक्स्ट पॉइंट कोन दै छै does the center of mass of a body necessarily lie inside the body. Okay तो मुको कहै छै हमको ए चारटा ऑब्जेक्ट रो काडियर स्फीयर सिलिंडर रिंग और क्यूब रो सेंटर ऑफ मास काडियर. सेंटर ऑफ मास तार कोडी लाई करछ. आ हम गिवन छै सब जाकर होछि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. ओके तो फर्स्ट देखो स्फीयर. इलाज मन करो स्फीयर. स्फीयर से कोन दिछि हम सब जाक मास एडा होछि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. सब जाक होछि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. तो स्फीयर तो तमे मन करो फॉर एग्जांपल गोटे एडी मु मन करो पेन नेउछि. पेन टाको बैलेंस करिया पे हम सब बळे बैलेंस जति करिया अछि त हम कोडी करिया मझिरे देले सेला बैलेंस होछि कोन पे कम मैंने तार सेंटर ऑफ मास ता मझिरे लाई करछि. सेम सेमिति स्फीयर को भी जति बैलेंस करिया अछि तार सब जाक मास कोडी कंसंट्रेट होछि तार सेंटर. तो स्फीयर रो सेंटर ऑफ मास कोडी लाइक होछि इन इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. ओके तो सेकंड केस को हम बेजिबा. सेकंड केस रे कोन दैछि सिलिंडर. ए सिलिंडर रो सेंटर हम किंदी काढी परिया. ए सेंटर सिलिंडर रो सेंटर काढे पे मो एडी गोटे दीडा एक्सिस बनौछि. जो दीडा एक्सिस पूरा तार सेंटर रे पास करछि. तो जदि ए दीडा एक्सिस जदि हम बनौछि एदिर एक्सिस जोड़ी इंटरसेक्ट करिए सेडा को हमें तार सेंटर ऑफ मास कहि परने कम मैंने सब दीटा मु सेंटर दीटा जो एक्सिस बनेथिली पूरा जरा सिमेट्रिकल एक्सिस बनेथिली. सिमेट्रिकल एक्सिस माने कोन ए एक्सिस ता को जोड़ी मु डिवाइड करछि आर एपड साइड रे जति मास सेपड साइड भी सेति मास सेम सेमदी ए एक्सिस भी ऊपर जति की मास तळु को भी सेति मास. तो एदिरा जोड़ी इंटरसेक्ट करियो से पॉइंट आ तार सेंटर ऑफ मास. ओके तार सेंटर ऑफ मास कोड लाइक कला सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके स्फीयर चलला सिलिंडर चलला. एबे गोटे रिंग कथा देखिया. एटा हो जोड रिंग. तो रिंग रो सेंटर ऑफ मास कोडी अछि. रिंग ने जतो तमे देखुछो रिंग को एग्जांपल ले जो चूड़ी
चूड़ी माने बेंगल चूड़ी रे जदि हम एग्जांपल नि दिया सेंटर ऑफ मास तार किन कैलकुलेट करा चूड़ीटा जो तुम केवल बुलेउ ट्राई कर अंगूठ रे तुम सब देखियो चूड़ीटा फर्स्ट तुम लेफ्ट हैंड रे धरि के तुम मिडिल फिंगर टाउ तुम सब से रिंग रो मझी रखला पर जत तुम इमिडी मूव करियो अंगूठी जत रोटेट करियो सिंग रोटेट करिया सहित ही तुम ताको मूव कर करियो तार मीनिंग कोन तार सेंटर ऑफ मास तार सेंटर रे लाइक हो तेडा हम कोन लिख परिया इट लाइज इन इट्स सेंटर ऑफ रिंग ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला हमर क्यूब सब क्वेश्चन को मु क्लियरली कोजी सुनो भलसे एडा होची मनर ओडे क्यूब ए क्यूब रो हम सेंटर किन केडिया आर सेंटर ऑफ मास सेंटर रे लाइक करते ऑब्वियसली बट आ सेंटर टा किन केडिया तार सब जा डायगोनल बनि दियो गोटे तार जदि हम डायगोनल सब जा बना तार सब या डायगोनल जोडी इंटरसेक्ट करछि सेटा तार सेंटर हो ना नहीं ऑब्वियसली सेटा तार सेंटर हो एंड इट्स सेंटर ऑफ मास तो हम कोन लिख परिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स ओके तो चारटा जरा हम काट देले एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा चारटा जरा हम सेंटर ऑफ मास लोकेशन में कहि देली तमो एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी ओके आ विषय में भाबो एडा सिना ओडे स्फीयर थिला स्फीयर रो सेंटर ऑफ मास ता भीतर रहला एडा गोटे सॉलिड सिलिंडर थिला तार सेंटर ऑफ मास भीतर रहला बट रिंग को जतो हम देखिलो रिंग रो सेंटर ऑफ मास ता एडा होचे रिंग रो सेंटर ऑफ मास तार भीतर अछि कि ना ता बाहर अछि हो कि ने तो तार मीनिंग कोन सेंटर ऑफ मास बाहर भी रही परियो इट इज नॉट नेसेसरी तो हम लिखिया नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट center of mass of a body lie inside the body. For example, in a ring रे देखिलो आ गोटे कोन एग्जांपल नै परिया hollow cylinder hollow sphere hollow cylinder hollow sphere tumbler गोटे होची ग्लास ऑब्जेक्ट ओके एटसेट्रा ए सबुरा सेंटर ऑफ मास तांको भितरे लाई करनी सेंटर ऑफ मास लाइज द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन सल्ला एबे लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल द सेकंड एग्जांपल हम कोन कहिछि इन द HCl molecule the separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule. Given that the chlorine atom is 35.5 times as massive as hydrogen atom, and nearly all mass of an atom is concentrated in its nucleus. तो हम ओडी से कोन कहै छै गोटे से हम मॉलिक्यूल दे छै हाइड्रोजन क्लोराइड रो तार हम सेंटर ऑफ मास कैरियर अछि ओके तो आउड कोन गिवन दे छै हाइड्रोजन क्लोराइड का H और Cl अछि तार Cl रो मास होछि H रो मास केते यदि x Cl रो मास 35.5x ओके तो एडा को मो एक्सिस रे बनै देखो सब एडा होछि माने कर x और y एक्सिस जदि माने कर हाइड्रोजन ने एडी लाई करछि आ क्लोरीन एडी लाई करछि आर मास माने कर x नै m मुनोछि आर मास तो 35.5 तो आर हम सेंटर ऑफ मास कैरियर अछि ओके तो एडा होछोडे स्मॉल वेट ऑब्जेक्ट एडा होछोडे अधिक वेट ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ता कपड़े लाई करियो क्लोरीन एडे माने पाखा के ए पाखा के पॉइंट रे कोडे लाई करियो ओके माने फॉर एग्जांपल तमे कोनस भी ओडे नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओडे ऑब्जेक्ट तक नहीं कियो इमीडिएट ऑब्जेक्ट अछि अधिक मास माने को एपड़ अछि तो सो ऑब्वियसली तार सेंटर ऑफ मास ता एपड़ रहियो कम पे कम ना अधिक मास तार एपड़ साइड कंसंट्रेट अछि ओके तो माने कर ए ऑब्जेक्ट लाई करछि 0 0 एटा कोड लाई करियो कोन गिवन अछि दि जण दर सेपरेशन अछि 1.27 एंगस्ट्रॉम 1.27 एंगस्ट्रॉम 0 तो x एक्सिस रे लाई करछि y एक्सिस रे 0 तो x एक्सिस रे सेंटर ऑफ मास पई फार्मूला कोन हम जानछन
एटा मु रेफरेंस पे 0 0 नहीं एटा जो 0 0 हला एटा 1.27 हबो ओके x सेंटर ऑफ मास पे फार्मूला कण m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 ओके तो m1 को गिवन अछि m1 रो वैल्यू मन करो m x1 रो वैल्यू 0 m2 रो वैल्यू कोन 35.5 m x रो वैल्यू कोन 1.27 divided by m plus 35.5 m okay error value 0 35.5 into 1.27 m divided by 36.5 m m m cancel एबे हम एदिरा को मल्टीप्लाई करियार अछि आ तापर डिवाइड करियार अछि एडा हम करिबी एबे ता आगु हम तुमको कह दोछु y is सेंटर ऑफ y रे सेंटर ऑफ मास पे कोन m1 y1 plus m2 कोऑर्डिनेट करियार अछि सेंटर ऑफ मास m2 y2 divided by m1 plus y एडी y1 और y2 रे कोऑर्डिनेट कोन y1 0 y2 0 तो y सेंटर ऑफ मास वैल्यू कोन हो 0 तने से y एक्सिस को जाई नहीं हमें x एक्सिस पे अच्छा तो x एक्सिस पे y एक्सिस को जाई ना दिया तो तार सेंटर ऑफ मास y एक्सिस से कम है ऑब्वियसली एडी लाइक करियो x एक्सिस पे तो अब सब जरा वैल्यू पके के मल्टीप्लाई कर ले आर आंसर केता आसीबो 1.235 एंगस्ट्रॉम द 1.235 into 10 to the power minus 10. Okay, 1.235. Then R value 1.27, R center of mass value 1.235. Okay, it is center of mass बाहर पड़ला, center of mass calculate करिया कहतला, and approximate center of mass. तापर हमें next example का जरा move करिया, next question, third question. Third question कौन देची? A child sits stationary at one end of a long trolley, moving uniformly with the speed v on a smooth horizontal floor. एटा अछि गोटे मन कर ट्रॉली मु बने देछि मने कर चाइल्ड फर्स्ट ए जगह रे थिला आ ए ट्रॉली टा मूव करथिला वेलोसिटी v रे ओके से कोन कोछि इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन अबाउट on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the system? तो फर्स्ट खाली ट्रॉली टा मूव करथिला और चाइल्ड टा गुड जगह रे बसिथिला ओके तापरे कोन हला चाइल्ड टा मूव करे स्टार्ट कला तो चाइल्ड जेता मूव करे स्टार्ट कला हम से कोन बचाछि से वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड तो आगुरु जेते वेलोसिटी थिला सेंटर ऑफ मास रो सेटा केति की चेंज हेछि सेटा पछाछि ना व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली एंड चाइल्ड सिस्टम ओके तो एटा कुड एग्जांपल देखा मोडा बुझो चाहूछि एटा किमि बुझिया रस्ता तो आगुरु से ओनली वेलोसिटी v रे मूव करथिला तो आ ऊपर किछ हम एक्सटर्नल फोर्स देना दिया एक्सटर्नल फोर्स देना दिया पिल्लाडा खाली बसिथिला तापर से मूव करे स्टार्ट कला पिल्लाडा किछ एक्सटर्नल फोर्स दोनी ट्रॉली ऊपर आगुरु माने करा एडा होछि गोटे कोनोसी बॉडी तो बॉडी टा माने करा वेलोसिटी v रे मूव करछि सी सेतल पर्यंत वेलोसिटी v रे मूव करे जेतल पर्यंत ओडा एक्सटर्नल फोर्स मिलिनी आको एक्सटर्नल फोर्स माने करा f इक्वल टू माने करा 0 तार वेलोसिटी बोल करा v थिला माने एबे भी v ही रहइबो फाइनली भी v रहइबो जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो हमको वेलोसिटी चेंज करियर अछि किछि गोटे फोर्स दबा को पड़ियो किछि गोटे फोर्स देले ही तार फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हबो ओके तो जेहेतु एडी हम किछि एक्सटर्नल फोर्स दे ही ना दे पिलेडा बसिथिला एबे खाली पिलेडा मूव करे स्टार्ट कला पिलेडा खाली बसिथिला एबे मूव करे स्टार्ट कला तो वेलोसिटी कोन पे चेंज हो वेलोसिटी चेंज होबनी वेलोसिटी जते थिला एबे सेते की ही रहिबो ओके जदी किछि एक्सटर्नल फोर्स पड़थांदा ताहले इंक्रीज ना तो एडा मु लिखि बिले किंदे लिखि पेरीडा द फोर्सेस इन्वॉल्वड इन अ गिवन प्रॉब्लम जो भी फोर्स इन्वॉल्व अछि गिवन प्रॉब्लम रे द फोर्सेस involved in the given problem are the internal force of the system
हाँ कि नहीं इंटरनल फोर्स पिलाटा किछ हम किछ बाहर आड़ किछ फोर्स नहीं पिलाटा बसथिला से तार निजर इंटरनल फोर्स रे निजको वेलोसिटी देखिए मूव कला ट्रॉली ऊपर ओके नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम किछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं no external force is applied when the child runs so there will be no change in the center of mass of the system okay no change in the center of mass of the system velocity jatti kitla abhi velocity setting okay I hope already clear enough example number 3 no change in the speed of the velocity okay so then the next example ko jiba example number 4 example number 4 the question kono so that the area of the triangle contained between vector A and vector B is 1/2 of the magnitude of A cross B. मने करो मु एडा होची गोटे वेक्टर A एडा होची गोटे वेक्टर B एडा मुटी आगु नि होची एडा होची B वेक्टर गोटे एंगल तंग दि जण भितर थीटा मने करो अछि तो एडा को जदी मु गोटे ट्रायंगल जदी एडा बनो दोची A और B वेक्टर को नै गोटे ट्रायंगल एडा मु जदी जॉइन करले आ ए ट्रायंगल ले को मु मन का ला दोची P Q R ओके दीटा वेक्टर बनेली वेक्टर A और वेक्टर B तंग दि जण भितर एंगल थीटा अछि आ मु ट्रायंगल एडा बने देली P Q R ओके तो हम प्रूफ कोन करियर अछि एरिया ऑफ triangle PQR is equal to half of magnitude of A cross B. So that the area of the triangle contained between the vectors A and B is 1/2 of the magnitude of A cross B. Okay. So LHS equal to RHS के लिए हम proof करेंगे. So area of the triangle तो formula कौन? Half base into height. LHS half. इधर मैंने करा इधर perpendicular line. If let's assume PS is perpendicular to QR. Okay. So base are कौन? Half into QR into PS कौन है जीवो? Height. Okay. तो QR को हम कौन लिख पे रहे? वेक्टर A लिख पे रहे कि नहीं? एबे हम PS कौन? PS रो वैल्यू हम काढियार अछि. तो PS रो वैल्यू हम केमिति काढी परिबा? हम एज्यूम करछन PS एडा परपेंडिकुलर तो एडा होछ राइट एंगल ट्रायंगल. तो एडा को मु जदी राइट एंगल ट्रायंगल नै जिबी इन ट्रायंगल PQS इन ट्रायंगल PQS जदी मु sin थीटा रो काढी sin थीटा इक्वल टू कोन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर रो वैल्यू कोन परपेंडिकुलरिटी कोन अछि PS डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कोन PQ ओके तो एडी PS बाय PQ रो वैल्यू कोन अछि वेक्टर B तो एडी PS रो वैल्यू बाहर पडियो PS इक्वल टू कोन हिजो B sin थीटा ओके तो एडी PS जगह रे कोन लिख परिया B sin थीटा PS रो वैल्यू एडी पको B sin थीटा तो LHS रो वैल्यू केता असला A B sin थीटा by 2 AB sin थीटा हम कोन लिख परिया B sin थीटा कोडी आछे A क्रॉस B रे डॉट ना क्रॉस प्रोडक्ट तो हम कोन लिख परिया A क्रॉस B by 2 एडा ही थिला ना RHS रे एडा होची RHS तो LHS equal to RHS प्रूव ओके तो अबे नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करिया एग्जांपल नंबर 4 कोन the A dot B cross C is equal to the magnitude to the volume of the parallel pipe formed of three vectors A B C
एटा को तम कहया चाहिए आगुरु मु तम कहया चाहूची पैरेलल पाइप रो मीनिंग एटा होची एग्जांपल नंबर 4 हमरो पैरेलल पाइप रो मीनिंग जदी हमें गोटे स्क्वायर अछि मोर स्क्वायर को जदी मु 3D रे नेबी स्क्वायर को जदी मु 3D रे बनै से कोन बने क्यूब सेम सिमिति एटा जदी पैरेललोग्राम को जदी मु 3D रे बनेबी ये कोन बनेबो पैरेलल पाइप स्ट्रक्चर ओके 3D रे जदी देखा तो एडी हम ड्रॉ फर्स्ट करिया कोन हम प्रूफ करल छी ए टू प्रूफ A dot B cross C is equal to volume of parallel pipe. Okay, parallel pipe रे बोल मु डायग्राम बनोची फर्स्ट ओके एडा को नेकी मु तीनटा वेक्टर रेडी मु इमेजिन करा आउडे मु कलर पेंसिल ले करछि एडा मन कर तीनटा वेक्टर एडा मन कर मु एज्यूम करछि वेक्टर ए एडा को मन कर एज्यूम करछि वेक्टर बी एडा को मन कर एज्यूम करछि वेक्टर सी त मु कोन करे अछि a डॉट b lhs को rhs ले प्रूफ करे अछि तो lhs को पड़े सॉल्व करे स्टार्ट कर a डॉट b क्रॉस c तो हम कोन जानछन डॉट प्रोडक्ट रो मीनिंग कोन डॉट प्रोडक्ट कोन होय यदि मन कर a डॉट b अछि ताको कोन लिखा जाय a b रो मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा हो कि नै तो हमें एडा को कोन लिख परिया वेक्टर a रो मैग्नीट्यूड इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b और c रो मैग्नीट्यूड इनटू आद दि जण भितर जहा एंगल अछि सेला हम कोन लिख परिया cos थीटा ओके एडा होची LHS एबे हमें RHS सॉल्व करे स्टार्ट करो कोन करे अछि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप रा हमें फार्मूला कोन जानछन बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो एडी बेस जो अछि बेस रो एरिया हम काढे अछि बेस रो एरिया काढे पे हम कोन कर परिया वेक्टर b इनटू वेक्टर c कल तो रहता बाहर पड़े अब हम कोन काढे सर हाइट काढे अछि एठी हमरो हाइट काढे अछि ए हाइट हम किन काढिया जदी मन कर एग्जांपल एडा होच मन कर एंगल थीटा एडा जदी मन कर ये एंगल थीटा जदी मन कर ये बनौची तो एडा होच मन कर वेक्टर a तो आर हाइट केते हबो एडा वेक्टर a रो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते हबो हाइट ऊपर ए ट्रायंगल को मु सेपरेट करी देखौची एडा होच वेक्टर a एडा होच हाइट एडा होच वेक्टर a एडा होच हाइट एडा होच एंगल तो ए एंगल रे आर cos थीटा जदी हम काढिया cos थीटा रो वैल्यू केते हबो बेस बाय हाइपोटेन्यूज h बाय a तो हाइट इक्वल टू a cos थीटा एडा को मु सेपरेट देबो ए cos थीटा a cos थीटा बराने हाइट रो वैल्यू तो एडी पकई दे a cos थीटा तो a cos थीटा लिख देलो एडा को अरेंज करी मु भल से लिखु जेबे तो एबे RHS रो वैल्यू एतेला एबे देखो LHS रो वैल्यू कोन आस्थिला a रो मैग्नीट्यूड इनटू b क्रॉस c रो मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा RHS रो वैल्यू भी सेती सो आगुरु जो वैल्यू करथिले LHS इज इक्वल टू RHS hence a dot b cross c is equal to the volume of parallel pipe. Okay, so it is hence proved. तो अबे मैं सला 5 नंबर एग्जांपल तो अबे मैं नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करिया नेक्स्ट एग्जांपल कोन कहूची find the components along x y and z axis of the angular momentum L of a particle whose position vector is r with component x y z and momentum is p
with angular components px, py, and pz. Okay, so that if the particle moves only in xy plane with xy plane, the angular momentum has only z component. तो मो क्वेश्चन रे कोन कहूचे, तो क्वेश्चन हम कोन कहूचे, जदि मनकर गोटे पार्टिकल अछि, जदि मनकर गोटे पार्टिकल अछि जे कि गोटे एंगुलर मोमेंटम रे ट्रैवल करछे, तार पोजीशन वेक्टर हम गिवन अछि आ मोमेंटम भी गिवन अछि. ओके, जदि मनकर से ऑब्जेक्ट खाली xy प्लेन रे मूव कला, तार एंगुलर मोमेंटम ओनली z कंपोनेंट थाउछ एले हम प्रूफ करियर अछि. ओके, तो हम एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला कोन जानछनी, r क्रॉस. ओके, तो फर्स्ट टाइम अंक दिशा क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. फर्स्ट हम पोजीशन वेक्टर रे गिवन अछि x y z पोजीशन वेक्टर x I k प्लस y j k प्लस z k पोजीशन वेक्टर कर देली. तापर एबे एंगुलर मोमेंटम में गिवन अछि px I k py j k pz. ओके, तो एबे हम ए दि जन क्रॉस प्रोडक्ट करियर. क्रॉस प्रोडक्ट एबे हम ए दि जन करियर अछि r क्रॉस. तो मो एडा तुम क्रॉस प्रोडक्ट करिया पे तुम इजी ट्रिक सिखेइतली मन अछि. I कैप एडा मन कर j कैप एडा अछि k कैप प्लस एडी मन कर माइनस अखली एडी प्लस अखली x px y py z pz. तबे क्रॉस प्रोडक्ट करो. तो मु कोन कहइतली, जेतला हमें i को i सहित मल्टीप्लाई करिया तार क्रॉस प्रोडक्ट सब 0 होबो. तो जेतला हमें i को भी j सहित फर्स्ट मल्टीप्लाई करिया, तो जेतला हम i को j सहित मल्टीप्लाई करिया, फर्स्ट मु i कैप कथा लिखि दोछि प्लस i कैप. तो i कैप करिया पे हमें कोन करिया, i पाखरे जो दिरे कंपोनेंट अछि से जे कंपोनेंट को भूली जाओ, ए दिरे कंपोनेंट को भूली जाओ, x और p x को भूली जाओ, खाली एबे j और k कथा देखो. j और k भीतर मल्टीप्लाई करो, j और k भीतर मल्टीप्लाई कले कोन आसी एडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p z y माइनस p y z. ओके, तापर j k पर वैल्यू j k पे माइनस j k पे आगो लिख दियो. तापर j k पाखरे जो दिरे अछि y और py से दिरे को भूली जाओ, अलगा दिरे प्रोडक्ट रो क्रॉस प्रोडक्ट करो, अलगा दिरे जिंस रो x into pz माइनस px into z. तापर k प्रोडक्ट k को जवा, k के पाखरे प्लस अछि तो प्लस k लिख दवा. तापर के पाखरे जो दिरे जिंस अछि z और pz से दिरे जिंस भूल जाओ, आउ दिरे जिंस को क्रॉस प्रोडक्ट करो pyx माइनस pxy. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू एतिके. एंगुलर मोमेंटम रो विक्टोरियली वैल्यू पळासला. तो हम एबे से कोन कहै छी, से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन so that if the particle moves only in x and y plane, से खाली मूव करछ x और y plane रे, if moves only in xy plane, जदि से खाली xy y plane रे ही मूव करूची, तो तार जो पोजीशन वेक्टर in z axis is 0, linear momentum भी in z axis is 0. तार मीनिंग कोन, z equal to 0 and pz equal to also 0. तो ए सब जगह वैल्यू आइरे पको लिनियर मोमेंटम. L equal to कोन हबो I into pz एडी अछि, तो pz रो वैल्यू 0, एडी भी z रो वैल्यू 0, तो 0 minus 0 0 माइनस j के एडी pz अछि, तो pz पला 0, एडी भी z अछि तो पला 0 k कैप into एडी z राइन, तो एडा होछि तार आंसर. तो एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू कोन, तो कौन प्रूफ करे एंगुलर मोमेंटम रो ओनली z कंपोनेंट रहे. तो एंगुलर मोमेंटम रो खाली z कंपोनेंट अछि ने,
तब किछु डाउट अछि z कंपोनेंट मु कहू बट z जगह नहीं x पे ही अछि तो एटी z डायरेक्शन रे अछि कोन प्रूफ करैतला एंगुलर मोमेंटम ना z रो डायरेक्शन अछि तो एंगुलर मोमेंटम z रो डायरेक्शन अछि ना नहीं क्या सिग्निफाइज z एक्सिस तो तार डायरेक्शन ना तो z एक्सिस रे ही अछि खाली वैल्यू गुडा को इधर को ओके तो हेंस प्रूफ So, ଏବେ ଆମେ next question କୁ ଯିବା question number 7 question number 7 କଣ ଦେଇଛି two particles each of mass m and speed v travel in opposite direction along parallel lines separated by distance d so that the angular momentum vector of the two particle system is the same wherever be the point about which the angular momentum is taken for example माने question is कौन देछे तीनटा पार्टिकल्स देछे जर देयर मास सेम और वेलोसिटी भी सेम अथवा दिजन जाक ऑपोजिट डायरेक्शन रे ट्रैवल करछन्ते पैरेलली ट्रैवल करछन्ते बट ऑपोजिट डायरेक्शन रे ट्रैवल करछन्ते ओके हम प्रूफ कोन करियर अछि जदि हमें दीटा द्वारा एंगुलर मोमेंटम काढुछन्ते सिस्टम रे दीटा एंगल दिजन द्वारा मिसे कि जदि हम एंगुलर मोमेंटम काढु जदि माने कर जणर एंगुलर मोमेंटम एल आ जणर l2 जदि हम मिसो चन्दी l = प्लस वेक्टर मिसे कि जदि हम को गोटे अबाउट नेक्स्ट काढुचंदी तर एंगुलर मोमेंटम ना सब बेले सेम करियो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट वेयर द पॉइंट इज डायग्राम में कहता मो भलसे बुझा पड़ियो मो माने को एक्सिस बने दोची एडा एक्स एक्सिस एडा y तीनटा पार्टिकल अछि गोटे पार्टिकल अछि m और गोटे पार्टिकल अछि माने कर तीनटा तार मास m ए पार्टिकल ना एपेड मूव करछि with velocity v एडा ऑपोजिट डायरेक्शन एपड़े मूव करछि with velocity v दिजन जाक भीतर डिस्टेंस होछि d एडो एतिर डिस्टेंस होछि x हम प्रूफ कोन करियर अछि so that the angular momentum vector of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken तार मीनिंग कोन आई जदि ए दीटा को जदि हम सिस्टम मिलिया अगर पॉइंट मन करे ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस से करिया ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस जदि हम एंगुलर मोमेंटम दिजन जाक एजे सिस्टम करचंती सब बेले सेडा कांस्टेंट रहयो माने आर डिस्टेंस x हो कि y हो केते डिस्टेंस हो जिनर इररेस्पेक्टिव ऑफ x डिस्टेंस सेम रहयो ओके x ऊपर से डिपेंड ही करें बोले हम प्रूफ करें तो l system is equal to vector l1 plus vector l2 ओके नहीं फर्स्ट मतलब वेक्टर l1 फाइंड करेगा वेक्टर l1 रो एडा होची मास 1 एडा होची पार्टिकल 2 l = r क्रॉस p पोजीशन इनटू मोमेंटम ओके तार पोजीशन कोन तार पोजीशन कोन हो x i कैप क्रॉस p p माने कोन मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू v वेलोसिटी से को डायरेक्शन अछि माइनस j रे माइनस j के सेम सेमिति एबे मु y एक्सिस करते l2 रो वैल्यू काढे l2 पई पोजीशन वेक्टर कोन से केतरे जगह अछि x + d इनटू तर वेलोसिटी को मोमेंटम पाई m इनटू वेलोसिटी m इनटू वेलोसिटी इनटू y एक्सिस ले होची तो प्लस j के तो एबे हमु एदिरे रो वेक्टोरियल सम एटा सब होची वेक्टर सम तो ए सिस्टम एबे काढिया इक्वल टू l1 वेक्टर प्लस l2 वेक्टर तो l1 वेक्टर रो वैल्यू कोन थिला x i कैप multiplied by minus mv j cap plus x plus d I cap mv j cap okay
तो एटा को हमें सॉल्व करियर अछि सॉल्व करी प्रूफ करबो ओके I into j भितर एटी मल्टीप्लिकेशन अछि I क्रॉस j अब इधर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख दियो माइनस mvx ओके सेम सेम दे I क्रॉस j अब इधर भितर मल्टीप्लिकेशन अछि का भितर mv into x plus d आउ थरे I क्रॉस j minus mvx plus I क्रॉस j cap एडी आसीबो mvx आउ गोटे आसीबो I क्रॉस j mvd तो इधर सेम होची प्लस mvx I j cap minus mvx into k cap इधर कैंसिल हो तो वैल्यू पे कौन रहला mvd I cap क्रॉस j l of system तो इडा हम प्रूफ करे थला नै कोन प्रूफ करे थला l of system doesn't depend on x माने l of the system doesn't depend on x माने हमें जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होचंदी ता ऊपर एंगुलर सिस्टम मास मोमेंटम ऑफ द एंगुलर सिस्टम doesn't depend सेडा हम प्रूफ करे थला तो से प्रूफ हैला नै x नहीं आ भितरे x नहीं तो x ऊपर डिपेंडिंग करिन सिस्टम रो एंगुलर मोमेंटम केते हेंस इट इज प्रूफ ओके तो अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल को जिबा नेक्स्ट एग्जांपल होचे एग्जांपल नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 रे कोन कोची ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ weight w is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in the figure the angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 तो अब जो डायग्राम अछि डायग्राम में मोडी बने दोछि एडा होची मन कर ओडे नॉन यूनिफॉर्म मास एडा सब बोले मन रख एडा नॉन यूनिफॉर्म मास नो एडा होची 36.9 डिग्री एडा होची 53.1 डिग्री दिस भीतर होची डिस्टेंस 2 मीटर ओके तो हमु से कौन करिया होची द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग डिग्री द बार इज 2 मीटर लॉन्ग like calculate the distance d एडा मन कर d डिस्टेंस आर डिस्टेंस केटा हो 2 minus d from the center of gravity of the bar from its left hand मनकर ए पॉइंट आउची सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट आउची तरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी दा लेफ्ट एंड रो केते पॉइंट डिस्टेंस रे अछि सेडा हमो कैरियर अछि ओके तो एडी कोन वेट पडुछ सब लिख दा अब एडा मनकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तळु गोटे से वेट दोछि w रो वेट त केते हो आर मास सिटी देछ ने सॉरी मास भी गिवन है तळु w लागुछ ओके तो एडी हम खाली d कैलकुलेट करे एपड मनकर टेंशन पडुछ t1 एडी गोटे टेंशन पडुछ t2 तो जदि एडा 36.9 एटार भी वैल्यू हो 36.9 आर जदि वैल्यू 53.1 आर भी वैल्यू हो 53.1 एडा को मन रखुची θ1 एडा को मन रखुची θ2 तो एडा जदि t1 आर ऊपर फोर्स केते पडुची t1 cos θ एपडे केते फोर्स पडुची t1 sin θ एपडे जदि t2 पडुची आर वैल्यू केते हो t2 cos θ आर वैल्यू केते हो t2 sin θ ओके एटी तो सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस होची द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल equilibrium as well as in rotational equilibrium ओके तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमर कोन पड़ अछि फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि तार मीनिंग कोन ऊपरू जति फोर्स पड़छि तळको भी सेति फोर्स पड़छि तो ऊपरू कोन फोर्स पड़छि t1 cos θ1 plus t2 cos θ2 is equal to w एडा सिगल हमर फर्स्ट इक्वेशन आउ गोटे इक्वेशन कोन आसी होबे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम
रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि माने ये बुल्लुनी भी बुलिया वाला मोशन को कोन कहछन हमें टॉर्क तो आपरे टॉर्क भी 0 ओके तो टॉर्क पई एबे हमें एता काढिया टॉर्क जो पडुचे ता पई एबे काढिया हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि सेति पई हमें कोन फोर्स पडुचे टॉर्क पई कोन क्लॉकवाइज जति की फोर्स क्लॉकवाइज जति टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज भी सेति तो टॉर्क पई हम कोन हम लिखि परिबे एडो देखो एडो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अछि ऊपर तळो भी सेम थिला साइड साइड भी सेम तो म एडा आउट भी लिखि परि t1 sin theta 1 is equal to t2 sin theta 2 एडा को इक्वेशन नंबर 2 दोछि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज कोन मते एडी एता मिलछि टॉर्क मिलछि एपडे क्लॉकवाइज t2 sin theta एंटी क्लॉकवाइज पई कोन टॉर्क पडछि t2 cos theta 2 into 2 minus d एंटी क्लॉकवाइज t2 cos theta 2 into 2 minus d क्लॉकवाइज कोन सिनी पडुछि t1 cos theta 1 into d t1 cos theta 1 into d एडा होछि मोर इक्वेशन नंबर 3 एबे मु कोन करिवि डिवाइड करिवि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 by इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो t1 cos theta 1 d divided by t1 sin theta 1 is equal to t2 cos theta 2 2 minus d divided by t1 sin theta 2 t1 cancel t2 cancel cos theta 1 by sin theta 1 केते tan theta 1 d is equal to cot theta 2 into 2 minus d tan theta 1 रो वैल्यू कोन tan 36.9 into d is equal to cot 53.1 into 2 minus d tan sorry the cot पड़ असला tan की लिख दी sorry एटा भी थिला cot theta 1 तो cot 37 रो वैल्यू केते 4/3 into d is equal to cot 53 रो वैल्यू केते 3/4 into 2 minus d 4/3 d is equal to 6/4 minus 3/4 d तो एटा को एपडा अनलो प्लस हो जा 3/d plus 3/4 d is equal to 6/4 माने 3/2 तो एटा हमें सॉल्व करिया तेरे चोकू मु 12 एलसीएम नेली 12 हर हरी लबर कोन 12/3 कल 4 4 चोकू 16 d plus 3 3 9 9 d is equal to 3/2 माने 25 d by 12 is equal to 3/2 2 6 तो d रो वैल्यू केते हला 18 ओके तो d रो वैल्यू तो मोडी काढिया कहतला d रो वैल्यू आसला तो आज रे लेक्चर एती हेगा नेक्स्ट लेक्चर रे मु तुमको आ बाकी जो नोट एग्जांपल हला सेटी करबी और ता सहित हम पूरा चैप्टर टिके टिके रिवीजन कर जा ओके सो टिल देन थैंक्स गुड बाय